हाय हेलो वेलकम टू योर चैनल चेंज फॉर जीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। So today I am back with one more edition of interview series. Yes, my dear viewers, my dear students, today I am going to speak on interviews once again. So first two episodes series you have watched, I am very much sure, and today I am going to speak on the series number 3 pertaining to interviews. So today I am going to tell you the types of interviews. Today I am going to tell you on a topic called as types of interviews. This is a very important concept. It is there in everyone's life. The person who is going for interview, उसको इस phase से जाना ही पड़ेगा. And apart from this, students के लिए भी it is a part of syllabus. Okay, so listen carefully. End of the session जो भी मैं अभी बताऊंगा, after the end of session definitely I am very much sure आपको types of interviews के बारे में एक fair enough idea आ जाएगा. So let's start the types of interview episode. So here are different types of interviews that I am going to tell one by one now. So let's start with type number 1. So before type number 1, I explain now why these types came, why companies have made various types. Basically the reason behind this is to select the best candidate for their company. ये टाइप्स बने ही क्यों थे? इट कुड बी वन टाइप ऑफ इंटरव्यू. सीधा आप बात कीजिए और कैंडिडेट को अपॉइंट कीजिए. होता था, ऐसे भी होता था पहले, बट नाउ सिंस देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं इंटरव्यूज के लिए. सो कंपनीज आर शेड्यूल्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, 1 2 3 4 अलग अलग राउंड्स बनाए हैं. आपको उसमें से क्लियर होना पड़ेगा. सो एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू द लास्ट राउंड, दैट टाइम कंपनी को बेस्ट में से बेस्ट टैलेंट मिलेगा. सो दैट्स द रीजन दे हैव डिसाइड. सो यू कैन इमेजिन आपको कितना ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप अलग अलग टाइप्स करने का रीजन यही है. Okay, they want the best candidates for their companies. They want the suitable candidates for their companies, because they want to take so many things out of the candidate. However, they are recruiting a person. So why they're going to recruit a person who is not having that much of knowledge, confidence? उसको क्यों अपॉइंट करें? अगर अपॉइंट करना ही है तो let appoint the person who is very much capable. लेकिन उनको कैसे कैंडिडेट एक कैपेबल कैंडिडेट मिलेगा? बहुत सारे इंटरव्यूज के टाइप्स को यूज करने के बाद, अलग अलग क्वेश्चंस पूछने के बाद, they are going to get a good candidate. This entire process is called as crowd sourcing. इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्राउड सोर्सिंग, जहां पे बहुत सारे लोग, if there is an post in any particular company, not one single person is going there. एक या दो लोग जाएंगे नहीं वहां पे. There are some thousands of students who are going for the interview, candidates are going for interview. इसके लिए अभी हर एक candidate को personally तो बात नहीं कर सकते. That's the reason they are come up with so many types, so that they can get a best candidate out of 200 300 whatever number of candidates who are applying for that particular post. Now here there are different types that I am going to tell. Now recently there is a concept which is developed that is called as interview लेने से पहले, face to face interview लेने से पहले, they are asking students to go through a concept called as debate or group discussion. यहाँ पे क्या होता है? दे आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू कम इन अ पर्टिकुलर रूम. 20-25 लोग आ जाते हैं, वहां पे उनको एक टॉपिक दिया जाता है एंड दे हैव टू डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी द सेम थिंग. सो whoever speaks best, whoever raises valid points, their names will be noted down and those candidates will be in for the next round. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द प्रोसेस इज लिटिल फास्ट. प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है? लिटिल फास्ट हो रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप डिस्कशन हो या डिबेट हो, यहाँ पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है एंड दे आर गेटिंग सम गुड स्टूडेंट ऑन दोज पर्टिकुलर candidates. They are going to use this various type that we are going to discuss now. So the first type of interview is telephonic interview. ये तो ग्रुप डिस्कशन से पहले भी आएगा. समटाइम इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इंटरव्यू इज इनटू डिफरेंट प्लेस, जो डिस्टेंस वाइज बहुत ज्यादा है, सो दैट टाइम दे विल नॉट कॉल द इंटरव्यू द कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ फर्स्ट राउंड. व्हाट दे विल डू, दे विल गिव अ टेलीफोनिक कॉल. तो कॉल करेंगे एंड दे विल आस्क सेट ऑफ क्वेश्चंस 3 4 5 6 एंड हाउ ही इज रिप्लाइंग. ऑन दैट बेसिस दे आर शॉर्टलिस्टिंग और उनको वहां पे बुलाया जाएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक राउंड जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फेस टू फेस हो नहीं है. तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपके वॉइस के ऊपर, कितना अच्छा आप बात कर रहे हो, कितना क्लियरली आप बोल रहे हो. ऑन दैट बेसिस आपका सिलेक्शन होगा. फॉर एन एग्जांपल इंस्टेंस, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और या आप यू आर इनटू अ क्राउड एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ यू आर गेटिंग अ कॉल, so that time what you have to do, if it is not possible enough to answer the questions of an interviewer, that time you need to request in a very polite manner, sir, it is not a right place to answer all your questions, sir, give me 5 minutes, I'll call you back, or sir, you can call me after 5 minutes, that time I can be in a right place, from there I can answer all your questions. आपको ठीक से बताना पड़ेगा, नहीं तो if you are in a very crowded place and if you are giving your interview, it is not possible to answer the questions properly. So you have to politely request to an interviewer and you have to give an interview then. So the first is telephonic interview, which is very important. Second is face-to-face interview. A group discussions वगैरह, ये some companies are using. It is not like everyone is using. Some companies are using group discussion and one more. What is that? Debate. Okay, but not all the companies. So the first is telephonic interview. Second is face-to-face interview. Now what is face-to-face?
ओके, फेस टू फेस एक यहाँ पे इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू भी आप होते हैं, आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछा जाएगा. इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपल वेयर इंटरव्यूअर इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, आपके स्ट्रेंथ्स, हॉबीज, एवरीथिंग दे विल बी वांट टू नो. रीजन क्या है आपका एक कॉन्फिडेंस चेक करना एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, दैट्स इज डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट गेटिंग टू ऑल दोस थिंग्स. जस्ट आई एम टेलिंग यू द सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड एज फेस टू फेस इंटरव्यू वेयर वन सिंगल पर्सन इज आस्किंग यू द क्वेश्चंस. ओके, नाउ द थर्ड इज पैनल इंटरव्यू. इफ यू क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू देन यू आर एंटरिंग इनटू द सेकंड राउंड, दैट इज कॉल्ड एज पैनल इंटरव्यू. पैनल का मतलब होता है यहाँ पे 3 या 4 लोगों का आपको एक पैनल मिलेगा, ग्रुप मिलेगा. दे आर द इट इज एन ऑफिशियल टीम व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू रिक्रूट द पीपल. नो 4 और 5 पीपल. ओके, 3 या 4 लोग तो होते हैं. whenever you are there for a panel interview, सोच के जाइए, माइंड बना के जाइए कि 3 और 4 people will be there for this round of this kind of interviews. when you are going for an interview, 3 या 4 लोग आपके सामने बैठे होंगे. you have to go and sit very confidently. अकेले होते हैं आप लोग यहाँ पे. then questions will be asked from the panel and you have to answer one by one. The panelists के जो भी questions आपके ऊपर आएंगे, you have to answer one by one. you have to be very careful. you have to listen very carefully. कौन से interviewer से question आ रहा है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. and you have to look very confidently into the eyes of an interviewer and you have to answer one by one the all questions of interviewers. That is called as panel interview. Okay, next is stress interview. Stress interview is a type of interview. ये ज्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होता है. so freshers के लिए ये ज्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर when you are going for other next job, not for a first job, when you are going for a next job, that time you may be getting a different post or high post के लिए आप apply कर सकते हो. that time a company want to test your stress level because if you can't handle the stress then you are not right candidate for that particular post. क्योंकि वो जो पोस्ट होता है, it is for example assistant manager हो या manager का जब भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, that time it is all about handling pressures. तो इस इंटरव्यू में आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन. they want to see how much you are patient. आप कितने पेशेंटली उनके आंसर उनके क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हो. दिस इज व्हाट दे वांटेड टू टेस्ट. अगर यहाँ पे आपने अपना टेम्पर यहाँ पे खो दिया देन इट इज ऑल ओवर फॉर यू. सो यू हैव टू लिसन. जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इट इज जस्ट टू चेक योर पेशेंस लेवल. दैट्स इट. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रेस लेवल. बट ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए तो होता नहीं है, बट इट इज फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर द हायर पोस्ट्स के लिए. ओके, सो द नेक्स्ट इज HR round. HR round होता है जहां पर again one more round of interview where they'll be asking you situational based questions. आपका behavior यहाँ पे देखा जाएगा. What kind of language you are using. You have to be very soft. You have to have very soft language. आपका जो वॉइस क्वालिटी है बहुत अच्छा होना है, सॉफ्ट होना है. यू कांट रेज योर वॉइस ओवर देयर. पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाएगी. द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर आंसरिंग, बिहेवियरल के बेसिस के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इट मे बी अ लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू यू कैन से, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछकर आपके पर्सनैलिटीज के, वो आपके पर्सनैलिटीज के ऊपर, वो आपके बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे एंड दे विल बी टेस्टिंग यू. This is not in the beginning, but it is also part of interview that is called as exit interview. This will be there for students who are there for academic wise, जो भी types of interviews पढ़ रहे हैं उनके लिए एक इंटरव्यू होता है exit interview. Exit interview ये उनके लिए होता है जो कंपनी को छोड़कर जाने वाले होते हैं. It is for those people who are leaving the job. So company, before a person or an employee want to quit, before he resign, company want to meet him one last time to know what's the problem, why he is leaving the organization. Reason क्या है यहाँ पे, जो भी उनको problem employee से सुनने में मिल रहा है, they want to work on that. और वो same problem should not repeat with the other employees. So they want to know what's the reason for quitting the organization. This is called as exit interview. लेकिन ये तो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स के लिए होगा नहीं, ये उन लोगों के लिए होता है जो कंपनी को जितने भी सालों काम करने के बाद छोड़कर जा रहे होते हैं, उनके लिए एक्सिट इंटरव्यू आएगा. सो आई होप दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. आई एम वेरी मच श्योर इनको सुनने के बाद आप प्रिपेयर रहोगे अलग अलग टाइप्स के लिए. ये मत सोच के जाएगा कि देयर विल बी वन राउंड ऑफ इंटरव्यू. अगर रहा, वो भी सकता है, इफ यू आर गोइंग और वहाँ पे ज्यादा टर्नआउट नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स, तो हो सकता है इट मे बी डायरेक्टली अ फेस टू फेस इंटरव्यू. नो ग्रुप डिस्कशन, नो डिबेट, नथिंग, डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरव्यू एंड यू मे बी इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बट माइंड बना के जाइए कि ये सारे लेवल्स या टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आपके साथ होंगे. आई होप इसको देखने के बाद आप बहुत सारा प्रिपरेशन करोगे. इट इज नॉट ईजी. यू कांट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ओवरनाइट. यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड ओनली यू कैन फेस द इंटरव्यूज वेरी कॉन्फिडेंटली. आई एम वेरी मच श्योर आप लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यूज फेस करोगे सभी वीडियोज देखने के बाद. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.